A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject economics. Dear students, in the previous lecture, we have started our second chapter, that was collection of data out of the book Statistics for Economics. In the previous lecture, we have discussed about the primary source of data, that means the source from which the originally information is contained. Thereafter, we have discussed about the secondary source. It was the source which was already in the existence, either some with agency or some institutions. Thereafter, we have discussed about the primary and secondary data, the data that have been collected very first time by the investigator by communicating with the respondents is considered as the primary data, also known as the first hand data. Thereafter, we have discussed about the secondary data, the data that is already in existence or has been used by some agency or institutions earlier also is known as secondary data, and the secondary data is also known as the second hand data. Thereafter, we have discussed about the differences between primary and secondary data on the basis of originality. So primary data was original and secondary data was not original. Thereafter, on the basis of objective, for collecting of the primary data there is always an objective, and for secondary data there always exists an already objective. So we have to match with the earlier objective and our present objective. And the last one, that is a difference in the cost of collection. If we talk about primary data, then it is costlier affair to collect the primary data because it involves the huge amount of time, money and efforts. But in the context of the secondary data, it is a cheaper source because you have to contact a particular agency or the particular person who is already having the data. So no involvement of that much time, money and efforts are there. Now today we are going to discuss about the different methods of collection of primary data, in which we are going to discuss about the personal interviews first method, that is the direct personal investigation method. So let's get started. The very first concept is giving a complete image or complete map about the chapter and what is the basic topic, how basic data is collected, or it can be asked like some statistical method, name any statistical method, name some statistical method, or it can be asked in the form of modes of collection of data. So basically it is associated, collection of data is associated with the primary data only because secondary data is already in the existence. So what we used to do, we used to collect the primary data only. So basically there are three methods. The very first is the personal interviews, the second one is the information through questionnaires and schedules, and the last one is the telephonic interviews, and every of the method is having its subpart. So let's get started about the very first method, that is the personal interviews. If we talk about the personal interviews method, in this the very first method is the direct personal investigation, as the name is signifying direct personal investigation. Just see over here, it is a method by which data is personally collected by the investigator. एक ऐसा मेथड जिसमें कि जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिस्पोंडेंट्स के पास जाके उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. आगे देखिए, इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर स्टैब्लिश द डायरेक्ट रिलेशन. इन दिस मेथड क्या होता है बेटा, जो आपका इन्वेस्टिगेटर है और जो आपका रिस्पोंडेंट है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, स्टैब्लिश होता है, और इन्फॉर्मेशन इज सीक्ड आउट और आस्क्ड अबाउट द कंसर्न सब्जेक्ट मैटर. एग्जाम्पल देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन. इफ यू वांट टू नोट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री, then a direct contact with them will be much helpful for that. Now see what can be the suitability, in which different situations this data or method can be used. So the topic is suitability of direct personal investigation method. So this method is suitable in some conditions. And what are the different conditions? The very first condition, the field of investigation is limited. जहाँ पे आपका area of study जो है, आपका field of investigation limited है, बहुत बड़ा नहीं है, wide नहीं है, वहाँ पे इस method को use कर सकते हैं. Second, a greater degree of originality of data is required. जहाँ पे हमको data एकदम उसके original form में, exact form में requirement होती है, वहाँ पे इसको use करते हैं.
नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, जहाँ पे कि आपको इन्फॉर्मेशन को क्या रखना होता है, सीक्रेट रखना होता है. देयर दिस मेथड इज़ यूज, सो इन्फॉर्मेशन इज़ केप्ट सीक्रेट बाय द इन्वेस्टिगेटर. नेक्स्ट वन, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि जहाँ पे हमें जो डेटा है वो एग्जैक्ट फॉर्म में चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए. एंड द लास्ट वन, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आपको या फिर उसकी रिलायबिलिटी को क्रॉस चेक करने के लिए आपको रिस्पोंडेंट के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को स्टैब्लिश करना होता है. देयर द direct person investigation method is used. Now the merits of the direct person investigation method, what are the merits? The very first is the originality. So if the data is directly collected by the investigator from the respondents who are the concerns with the subject matter, so data always remain in its very original form. The second one is the accuracy. So it is assumed that when the information is collected by the investigator from the respondent without any mediocre in between, so the data is fairly accurate and because it is personally collected. Next one is the reliability. Reliable मतलब क्या होता है बेटा, on which we can faith. So see over here, data collected through direct person investigation method is more reliable. ये data क्या होता है, ज़्यादा reliable होता है. Why? Because information is collected by the investigator himself. क्योंकि यहाँ पे investigator खुद क्या कर रहा है, information को collect कर रहा है, and इसलिए यहाँ पे जो data की reliability है, जो उस पर faithness है, वो हमेशा बनी रहती है. Next देखिए, that is related information. वेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब हम दैट मीन्स इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है रिस्पोंडेंट के साथ, एंड सम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड to cross check the authenticity and reliability of the data. Suppose the particular person have told something, so उससे related हम लोग कुछ और information questions ask कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे कि जो related information भी हमें मिल सके. The next one is the uniformity. Uniformity comes from the word uniform, that means same. So if we talk about the data that is collected through the personal investigation, so data is used to be in uniform, and always the uniform data facilitate the comparison easily. And the last one, that is elastic, and elastic means that is flexible. In this method, the method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustment in his सेट ऑफ क्वेश्चंस टू कलेक्ट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे डेटा इलास्टिक है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद आपका रिस्पोंडेंट के पास जा रहा है और वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को मॉड्यूलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कलेक्ट कर सके रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर. नाउ द डीमेरिट्स, द वेरी फर्स्ट इज द डिफिकल्ट टू कवर द वाइड एरिया. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू contact each and every person of a very wide area. So basically it is associated or used with the small scale of study. Next one, personal bias. Bias का मतलब होता है बेटा partial होना, cheating वाला, ठीक है. So this method is highly prone to पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. अगर इन्वेस्टिगेटर ही बायस्ड हो गया, पार्शल हो गया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी. दैट मीन्स वो जो कंक्लूजन्स हैं उतने रिलायबल नहीं रहेंगे. नेक्स्ट वन इज़ अ कॉस्टली. इट इज़ अ एक्सपेंसिव मेथड इन द टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स. टाइम भी बहुत इन्वॉल्व होता है इसमें, मनी का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है और एफर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है. वाई? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज़ कम्युनिकेटेड or contacted. And the next and the last one, that is the limited coverage, as it used to cover the very limited area, so results will be the less representative. Suppose देर आर 10,000 पीपल और उन 10,000 में से सिर्फ आप 10 लोगों तक कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो 10 पीपल हैं वो 10,000 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो आपके कंक्लूजन्स हैं वो रॉन्ग भी हो सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. हमने उनके नेम देखे हैं और इसमें पहला मेथड हमने स्टार्ट किया बेटा, दैट इज़ द पर्सनल इंटरव्यूज़. एंड इन द पर्सनल इंटरव्यूज़ वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इसकी मीनिंग हमने देख लिया है, सुटेबिलिटी, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल. लॉट्स ऑफ लव.